Hello and welcome to Sanket Group of Coaching. Today I am going to teach you how to make solution of linear equations in two variable. Now कैसे ये solutions prepare करने हैं वो ध्यान से देखो. जनरली solution 3 या 4 होते हैं, लेकिन एक linear equation के, ठीक है, in two variables there are infinite and infinite solutions possible. But हम लोग जनरली 4-5 मैक्सिमम, अगर आपके सर को पेपर लेंथी निकालना है तो 10 सॉल्यूशंस तक बाहर निकालते हैं, बराबर है, ही फाइंड 10 सॉल्यूशंस. बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी आर आस्किंग यू 3 to 4 maximum solution. Now how to find those solution? You will be given one linear equation. Let's say x plus y is equals to 12. Okay, now you need to find solution, 4 solution of this. 4 solutions का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को ये टेक्निक समझने के लिए what you have to do is draw a box like this and write x and y. फिर you have to imagine or assume certain numbers. Let's say अब मैं हर एक x को assume करूंगा, ठीक है, कि let x will be 0, x will be 1, x will be 2 and x will be 3. ओके, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, ये मेरा assumption है. All you need to do is solve this equation by putting the value of x every time and you will get 4 different solutions of y. Okay, so at x equals to 0, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं तो y हो जाएगा 12, right? At x equals to 1, यहाँ पे देखो 1 plus y is equals to 12, तो y is equals to 12 minus 1 and that is 11. Then at x equals to 2, तो 2 plus y is equals to 12, तो y is equals to 12 minus 2 and that is nothing but 10. Then ये आएगा 9 and so on, ठीक है. So there are how many solution possible for a single linear equation? Then there are infinitely many solutions will be possible to see the solution. समझ में आ गया? कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है. नाउ यू विल बी आस्क्ड, ऐसा भी पूछ सकते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन कैसे बनाना है, यू नो दैट. ओके, जस्ट अ मोमेंट, विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन. लेट्स से 2x plus 3y is equals to 10. Okay, make 3 solutions of it. Then again box बनाइए, x and y 0, 1, 2, ये अपना assumption है, ठीक है. assume करो और डाल दो. at x equals to 0, your y की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 0 plus 3y is equals to 10. तो 3y is equals to 10 and y is equals to 10 by 3. Okay, then at x equals to 1 देखो, 2 into 1 plus 3y is equals to 10. तो 2 plus 3y is equals to 10 होगा. 3y is equals to 10 minus 2, 3y is equals to 8, so y is equals to 8 upon 3. Okay, and at x equals to 2 देखो, at x equals to 2, 2 into 2 plus 3 into y is equals to 10. 4 plus 3y is equals to 10. 3y is equals to 6. So y is equals to 6 upon 3, which is 2.
Okay, in this way you can find solution of each and every equation you are given. Okay, now next बच्चों ध्यान से देखना, next is if you will be asked whether, check whether, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, check whether check whether 3,2 is the solution of x plus y is equals to 5. In short, आपको क्या करना है, ये 3 को x की जगह पे रखना है, राइट, एंड 2 को y की जगह पे रखना है, एंड चेक करना है if LHS is equals to RHS. Okay, if LHS is equals to RHS, then yes, it is the solution. Yeah, if it is not, then it is not a solution. तो put करके देखो, 3 plus 2 and that is equals to 5. So yes, 5 is equals to 5. But what if I say check whether 2x plus 3y is equals to 10. 2x plus 3y is equals to 10. So 2 into 2 plus 3 into 3 is equals to 10. 2 2s are 4. 3 3s are 9, which is not equals to 10, क्योंकि 4 plus 9 होता है 13, right? Which is not equals to 10, and hence 2,3 is not a solution of this linear equation which is in 2 variables. Understood, बच्चों? Clear? So let's begin your exercise 4.2 from your textbook. Exercise 4.2, major first sum. Which one of the following option is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solutions, yeah, infinitely many solutions. So what will be your answer? As I have taught, there are infinitely many solutions. Infinitely many solutions are there because we can have assumptions of either x or y. Okay, and we all know that there are infinite numbers. ठीक है, आप लोग कितने भी नंबर्स ले सकते हो, infinite numbers, so infinite solution is possible. Okay, now next, major second देखो, write 4 solutions for each of the following equations. उसका जो first है वो है 2x plus y is equals to 7. Now you need to write 4 solutions. What is our method? Prepare box first. X, Y, 0, 1, 2, 3. Okay? And now start doing method. At x equals to 0. What is our y? So 2 into 0 plus y is equals to 7. So y is equals to 7. Write it in the box. Then at x equals to 1, 2 into 1 plus y is equals to 7. So 2 plus y is equals to 7. Y is equals to 7 minus 2, 5. Then next, at x equals to 2, 2 into 2 plus y is equals to 7. 4 plus y is equals to 7. तो y जो है 7 minus 4 which is equals to 3. At x equals to 3 देखो, 2 into 3 plus y is equals to 7. 6 plus y is equals to 7. So y is equals to 7 minus 1 which is 6. Solution. Okay. First sum number over.
देन मूविंग अहेड, सम नंबर सेकंड देखो या इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कीप वैल्यू ऑफ पाई एज इट इज, डू नॉट राइट इट 22/7 या 3.14, कीप इट एज इट इज, ठीक है। सो पाई एक्स प्लस वाई, चार सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, x y 0 1 2 3, बेसिक जो मेथड है वही है। एट x इक्वल्स टू 0, पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9। देन एट x इक्वल्स टू 1, पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। ओके, देन थर्ड, एट x इक्वल्स टू 2, पाई इंटू 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, so it will be 2 pi plus y is equals to 9, y is equals to 9 minus 2 pi. And last, at x equals to 3, pi into 3 plus y is equals to 9, 3 pi plus y is equals to 9, so y is equals to 9 minus 3 pi. ये था solution of sum number 2 and the last one, second का last one. ये देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दिमाग चलाना है। x is equals to 4y, यहाँ पे आप लोगों को दिमाग ये चलाना है कि x is given in terms of y, तो अपना जो सपोजिशन होगा वो होगा y का and not of x, ये खास ध्यान रखे। हाँ, सो इजी करने के लिए, हाँ अगर इजी करोगे ना, इसीलिए ये बता रहा हूं, अदरवाइज आप लोग x को जैसे सपोज कर रहे हो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब मैं इसमें y को सपोज करूंगा 4 सॉल्यूशन 0 1 2 एंड 3। ओके, अब क्यों मैंने ऐसा लिखा कि एट y इक्वल्स टू 0, देखो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड करना पड़ता। ओके, सो ये आ गया 0। एट y इक्वल्स टू 1 देखिए, x is equals to 4 into 1 which is equals to 4. At y is equals to 2 देखो, x is equals to 4 into 2 8. At y is equals to 3, x is equals to 4 into 3 12. Okay, so that's the end of your major sum number 2. Moving ahead, third देखो, major third. Check which of the following are the solutions of equation. Equation दे दी है x minus 2y is equals to 4 and which are not. Okay, तो पहला देखो उसमें 0,2 है, 0,2 चेक करो, LHS is equals to RHS आना चाहिए। अगर LHS is equals to RHS नहीं आता है तो it is not a solution. If it is yes, then it is a solution. 0,2, 0 minus 2 into 2 is equals to 4. तो ये आया minus 4 which is not equals to 4, hence this is not a solution. Okay, then second देखो 2,0. This can be written as 2 into 0. 2 minus 2 is equals to 0, as well is equals to 4. That is 2 which is not equals to 4. Again, this is not a solution. अब एक बात याद रखने जैसी, ये क्रॉस सिर्फ सर कर सकते हैं, आप लोगों को क्या करना है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, देन चेक 4,0 देखो, 4,0, तो 4 minus 2 into 0 is equals to 4. So yes, 4 is equals to 4. Yes, this is a solution. Okay, then fourth देखो, √2, 4 √2, तो यहाँ पे डाल दो
Root 2 minus 2 into 4 root 2 must be equals to 4, which is not at all possible. Root 2 minus 2 fours are 8 root 2, which is not equals to 4, and hence this is also not a solution. Then check fifth one. 1 comma 1. Again इसमें check करेंगे. 1 minus 2 into 1 is equals to 4. So 1 minus 2 is not equals to 4. Hence, this is not a solution. Okay? Understood? And one last. Fourth. Fourth. Find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equals to k. 2x plus 3y is equals to k दे दिया है, x और y की भी वैल्यू दे दी है. Simply you have to what? Put it down and see. 2 into 1 plus 3 into 2 into 2 plus 3 into 1 is equals to k. 2 2s are 4 plus 3 is equals to k. So k is equals to 7. So that's the end of your exercise 4.2 बच्चों. If you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Thank you very much. Bye bye.